Hello students, welcome to my channel Hindi Learning. Today we will do the question 9 from the sample paper 2025-26. So this is Pathit Kavyansh. The poem is from your syllabus and we have to choose the correct option. Pavas Ritu thi Parvat Pradesh Pal Pal Parivartit Prakriti Vesh. So it's rainy season in mountain region and every moment the nature is changing its form. Meklakar Parvata par apne sahasra drug suman far. So series of mountains, so many mountains are there, and on that mountain, thousands of flowers are there, as if they are the eyes of the mountain. अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निच महाकर. So the mountain is seeing its reflection again and again in the water, in the pond. जिसके चरणों में पलातल दर्पण सा है फैला विशाल, and that pond is below the mountain and it is फैला है, spread. दर्पण is mirror. काव्यांश में किस ऋतु की बात की गई है? सो इन दिस पार्ट ऑफ द पोयम दे आर टॉकिंग अबाउट विच सीजन? सो इट इज रेनी सीजन, वर्षा. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, तालाब की तुलना दर्पण से क्यों की गई है? वाई दे आर कंपेयरिंग द पॉन्ड विद द मिरर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज साफ और स्थिर होने से, बिकॉज द वाटर इन द पॉन्ड इज clean and stable, sthir. So we have studied in the poem that its reflection the mountain is seeing in this water. Third question, प्रकृति के स्वरूप में पल पल परिवर्तन क्यों हो रहा है? So why every moment the nature is changing its form? So it is वर्षा ऋतु के कारण, because of the rainy season. पर्वत बार बार अपने को क्यों देख रहा है? Why the mountain is seeing its reflection in the pond again and again? उत्साहित होने से, because of excitement. निम्नलिखित कथन और कारण उस पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करके लिखिए. So the saying and the reason we have to think and we have to choose the correct answer. So पर्वत अपने रूप पर मुग्ध हो रहा है. So the mountain is fascinated by seeing its form. नीचे जमे जल में स्वरूप दिखाई दे रहा है, and he can see its reflection in the water below. So the option is second option. Sorry, so the option is the third option. कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है. The saying is correct and it is सही व्याख्या, explaining it correctly. I hope it is helpful. Thank you for seeing my video and do subscribe my channel.